Assalamu alaikum wa rahmatullah. Today is a new video lesson about MS Excel shortcut keys. In this lesson, you will learn how to move in a different cells. Normally, when we move to the next cell or previous cell, we use arrow keys. When we have to move forward or next cell, we press right arrow key to move forward. And if we want to move backward previous cell, we use left arrow key. There's another shortcut key to do the same task, different shortcut key to do the same task. If you want to move forward or next cell, you press tab key from the keyboard. Keep on pressing tab key, you will move forward. And if you want to go to the previous cells or want to go back, you will have to press shift plus tab key from the keyboard to backward, मूव बैकवर्ड कि पीछे की तरफ जाना है तो आपने क्या कर देना है, शिफ्ट प्लस टैब की प्रेस कर देनी है. सो दिस इज़ द ईजी एंड सिंपल शॉर्टकट की टू मूव टू द नेक्स्ट सेल और द प्रीवियस सेल. कि आपने सेल्स में आगे की तरफ जाना है तो आपने टैब प्रेस कर देना है. नॉर्मली हम राइट और लेफ्ट की आगे पीछे जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. टैब की प्रेस करेंगे तो आगे की तरफ चल जाएंगे और पीछे की तरफ आना है तो शिफ्ट प्लस टैब की प्रेस करते रहेंगे तो आप क्या है पीछे की तरफ आ जाएंगे. सो ईजी एंड सिंपल वे टू डू द टास्क. थैंक यू फॉर वॉचिंग.